फिर आपको दिक्कत क्या है? harassing the petitioner lordship Maybe- last 5 months. There was some miscommunication between the collector and the tehsildar or whatever authority is there. They did not know कि कैसे salary देना. But for all purpose, you are a patwari. You know, without salary also you survive for these periods. सर हाँ? उसी के बाद सरवाइव नहीं हो पाया तो मेरे को यहाँ पे आना पड़ा कि नहीं, कलेक्टर वेरी वेल नोन्स कि नहीं। how the पटवारी We also know how the patwaris are good human beings. तो I am really sorry, sir. Yes. This is okay, my lordship. My representation has not been pending, my lordship. My lord, उनको ये क्या कलेक्टर को ये ऑर्डर हो कि सर कम से कम उसको lenient व्यू से कंसीडर करें. अरे आप अब इतना थोड़ी बोलेंगे कि दुलार करते हुए Policy आपके के जो 33 पॉलिसी में है वैसा करेंगे. There is no department inquiry against me. There is no complaint against me. पटवारियों की कलेक्टर के ईगो के आगे पटवारियों की क्या सर? You know how well to deal with all those. Yes, madam. Why didn't you pay the salary for the period when the order was stayed? Good afternoon, sir. My name is Aditi Garg. I am Collector Mandsaur, sir. Yes. Why didn't you pay the salary for the period when there was an order of stay? He was entitled for the salary. Why did his salary was refused to be paid? Sir, actually, we did not refuse to pay his salary, sir. Sir, as per the original order, Yes. we moved his tehsil. So he was transferred from one tehsil to the other tehsil, sir. If I may submit, sir, to the court. Yes. So his DDO power was changed. Huh? So this is what happened because of the stay. Huh? We left the order as it is. Huh? We asked him to join at his original place, but we could not change the original order. Yes. So, unfortunately, sir, his DDO kept at the old place where he did not join, and hence his So salary. it was the could not- mistake of the DDO. Yes, sir. Not really a mistake of the DDO, sir. Since we could not change the order after the stay, that was left as it is. But that has been corrected now, sir, and his previous salary has also been given to him. The entire areas of salary has been My given. lord, They and justified- the order dated 12/12/2025. They modified my transfer. Kindly consider my lord the page number 10, my lord. Page number 10 of the 10 of the affidavit, my lord. इन्होंने सर ये कह रहे हैं कि डीडीओ नहीं किया. ऑर्डर तो 12/12/2025 को निकाला इन्होंने ज्वाइनिंग का मेरे को प्लेस पे. पेज नंबर 10 बोल रहे हैं आप. यस सर, पेज नंबर 10 ऑफ द एफिडेविट. काइंडली कंसीडर कार्य सुविधा की दृष्टिकोण से श्री योगेश भावसार पाटीदार को तहसील मंसूर नगर को रिक्त पटवारी हल्का नंबर 20 अन्य निजामुद्दीन तहसील मंसूर नगर को अस्थायी रूप से अन्य आदेश तक प्रभार सौंपा जाता है. नाउ they given the charge on 12/12/2025. Sir, I would just like to several application to give the charges. ये तो दूसरा तुम्हारा डिससेटिस्फैक्शन है. फर्स्ट यू वर नॉट पेड द सैलरी. They paid the salary on 12/12/2025. दिया. Now they have restored your position. No, definitely. कर दिया. But they are not explained by grievance instead. नहीं तो इसमें ठीक है दे ठीक है सर, अभी कर दिया है तो जी सर. satisfied. Otherwise you know the consequences what will happen then. My lord. तो इसमें क्या है कि when you have been now you have been placed at Mansoor, my lord. the same place where you are. No, I am not placed at same place, my lord. The different place. इसलिए होने के बाद आपको कहाँ जाना चाहिए? सर मंसूर में उनको जो मंसूर में जो टप्पा दिया हुआ था पहले, उस टप्पे को बदलकर दे चेंज द टप्पा. जो है 12/12/25. Sir, I would kindly like to. नहीं stay means you will have to restore his original place. Sir, When there is a stay order, that means he is relegated back to the place from where he has been transferred. Sir, I would just like to bring to light that after the stay order was passed, there was an order that was passed by the Tehsildar dated 9th of July, where he was attached to the Tehsil office. And he continued to be at this place. Sir, he was not transferred out or nor was he asked to join at a different place. Sir, he was continuing at the Tehsil office. It is only now for the purpose of the salary that his order has been modified in December, which the he will be working on the same place. No. Yes. Where? He is working in the same tehsil. नहीं ये बोल रहे अटैच किया था आपको. My lord, what happened when I was transferred? I am the different tappa, my lord. The stay order was
passed by this honorable court. हाँ. Thereafter, I When submit, was the stay order passed? my lord, the stay order passed on 17/7/2025. my lord. 17/7. Yes, my lord. हाँ, फिर क्या हुआ? Thereafter, my lord, I submitted the application before honorable court. हाँ. The collector, my lordship, that the court has ordered to stay the transfer order. तो आप But कहाँ पर थे उस समय? this उसी तहसील में उस टप्पा पे कहाँ पर? सर टप्पा में बता देते हैं सर. ठीक है, फिर उसके बाद देर आफ्टर सर इन्होंने मुझे अटैच कर दिया कहाँ? तहसील में. हाँ. तहसील में अटैच कर दिया आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस ऑर्डर, स्टे ऑर्डर. Yes, ये फिर तो उसके बाद इन्होंने नाउ मेलॉर्ड हैज पास 8/12/2025 स्ट्रिक्ट ऑर्डर मेलॉर्ड से. देर आफ्टर दे पास दिस ऑर्डर मेलॉर्ड 12/12/2025. तो अभी आपको वहीं वापस जाना है जहाँ थे आप. सर जहाँ वैसे जहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे भी मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन बट फिर आप दिक्कत क्या है? सर दिक्कत कुछ नहीं है सर. दे harassing the petitioner block last 5 months. My This is humble the submission is that now all the grievances of the petitioner are Yes. addressed unnecessarily. No, I am set not up them- necessarily the pressing the. You have I'm got there- the entire areas of salary. Yes, my lord. There was some miscommunication between the collector and the tehsildar or whatever authority is there. They did not know कि कैसे salary देना. But for all purpose, you are a patwari. You know without salary also you survive for these period. सर उसी के बाद सरवाइव नहीं हो पाया तो मेरे को यहाँ पे आना पड़ा. नहीं, The नहीं, collector very well knows कि नहीं. how the patwari has We survived. also know how the patwaris are good human beings. So you have survived for so many months, 5 months. And now Without the, salary. now the No, salary has Now been you have paid. enjoyed. You will get the enjoyment by getting a salary of areas of 5 months My lord. to celebrate the My new lord. year. ठीक है, इसको डिस्पोज कर दो. Why to? my lord, ये अस्थायी ऑर्डर इसको स्थायी कर दे बस. नहीं, ये नहीं, मैं वो नहीं कहूँगा. अस्थायी ही दिया जाए. अभी अस्थाई दिया जाएगा, फिर आपको लगेगा कि ऐसा कुछ है तो नहीं तो सर वो फिर वो I cannot say ये it. चेंज नहीं कर दे इसको, बस इतना सा है सर. This is बाकी the there is an prerogative order of the also. administration. नहीं the administrative they not transferred to तहसील में लॉर्डशिप. अभी आपको क्या किया? मंसूर नगर में है. हाँ. मंसूर नगर में ही रखा इन्होंने. हाँ, तो अभी मंसूर नगर का एक टप्पा दे दिया उन्होंने. हाँ, तो और क्या चाहिए आप? नहीं मेरे को कोई चाहिए नहीं, लेकिन ये इसको अस्थायी रूप से दिया है. तो बाकी क्या करा जाता है? कुछ नहीं सर, वो परमानेंट दिया जाता है. पुराना तो वो कंसिडर ना करेंगे ना. पहले आपका परमानेंट था ना. यस Yes, परमानेंट. madam. Now they are he's satisfied with the order. Please see that is Sir, ये जो Sir? post की हाँ sir, if I may kindly interject, sir. Yes, Actually, the court had kindly directed us to consider his representation. The Patwari has been posted at the same place since 2009 Yeah. with a brief interjection of 6 months, and then from 2016 till date, which is why he was transferred out, among other reasons. Hmm. The court kindly directed us to consider his representation, which we did. Yes. And till the disposition of the representation, the court directed us to stay the order of transfer. yes We have not considered his representation, Did it? and we have also given him a direction that he join at his place of posting. yes In the meanwhile, since his salary was not drawn, we have also given him his salary. yes yes. But the instruction stands that he has to join at the place of posting. Hmm. That is all I would like to add, sir. Thank you. ठीक है दोस्तों. सर इतना सा है कि सर मेरा जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो केस हो जाए, क्योंकि असल में क्या हुआ आपका ट्रांसफर ऑर्डर उन्होंने बोला ना कि उसमें क्या ऑर्डर था पुराना आपका? सर. दैट यू विल रिमेन देयर एंड योर रिप्रेजेंटेशन शैल बी No, my lord, after the first petition, my lord, the first petition was What was your disposed. first petition? How The- long you were there in the last place of? Sir, my lord, kindly consider. आप मुझे ये बताइए फॉर द लास्ट कितने साल का स्टे था? सर नहीं स्टे नहीं था ना सर, मैं वही अरे स्टे मतलब आप कितने साल से वहाँ काम कर सर रहे मैं थे? वही बता रहा हूँ हाँ. कि मैंने जो क्लॉज 33 का क्लॉज लिया है वो क्लॉज the- 33 भूल जाओ. दैट इज नॉट बाइंडिंग. मे बी सम अदर कोर्ट हैज हर्ड इट बट My इफ lord- यू आर्ग्यू विद इन फ्रंट ऑफ मी, टेल मी कि आप कितने साल से उस जगह पर थे? the 9 years sir. 9 years से. You have no right. अगर मैं होता तो स्टे भी नहीं करता. Sir, They have considered, the court has given you a breathing time to stay there, and till then they were directed to decide the representation. You definitely. will only direct them that you may be there. They will decide the representation within a period of Milord, 30 days. Just आप सुनिए तो पहली Yes, बात. This was the order which was originally passed by the court, my lord, and because they did not comply with the order, all this happened. I am not filing the contempt petition. my lord, contempt here. My lord, they आप मेरी बात को What was the last order passed by this court? my lord, this order, my lord,
the earlier milord in the Yes. WP number, नहीं नहीं इसी में हाँ WP no, number milord, क्या in the WP number, milord, 22061, हाँ हाँ 2025, the code has ordered, he, Yeah. the milord, consider the representation. Yes. Thereafter, What he was the consider, date of the order? milord, date of the order is, milord, 20th of June. 20th the of June. June, milord, Yes. and One thereafter, month milord, was given. milord, thereafter, One month was given. milord, That means they were supposed to decide your representation by 27-25. milord, thereafter, And- they decide the representation, milord, on 15/7/2025, 15? 7/2025, हाँ milord, on that order, उस दिन क्या किया उन्होंने reject कर दिया। दे रिजेक्ट कर दिया हाँ और हमने उसको चैलेंज किया दिस पिटीशन, किस पिटीशन में ये वाली पिटीशन में, हाँ तो उसमें क्या हुआ दे स्टे मिलॉट स्टे हाँ एंड देयर आफ्टर मिलॉट दे स्टे इज कंटिन्यू टिल दैट. बट नाउ आई से that the rejection order has been considered by ये जो rejection order था what is the rejection order दे रिजेक्शन ऑर्डर मिलॉट व्हाट दे 7 का rejection पढ़िए क्या what दे रिजेक्शन मिलॉट व्हाट दे सेड मिलॉट कि जो मेरे को क्लॉज 33 का जो बेनिफिट मिलना था, क्या है clause 33 the clause 33 is the office barrier of the society है उसको 4 साल तक 2 ईयर के जो है उसको उनको ट्रांसफर नहीं करना है इसीलिए तो मैं डिसाइड करवा देता हूँ ना उस पॉइंट को अभी सर. है ना तब तक आप वहां रुकिए जहां पर आपको अस्थायी रूप से दिया गया है। पर लेकिन वो तो डिसाइड इस पिटीशन में होगा विदाउट रिप्लाई हाउ इट नहीं नहीं उनको बोल देंगे ना डिसाइड करने के दे ऑलरेडी डिसाइडेड. नहीं नहीं उसको एक बार और अभी हो सकता है दे हैव नॉट अंडरस्टूड इट आप उसको बता देंगे इफ यूर ऑफिस बिकॉज इट इज अ फैक्चुअल फाइंडिंग आप यूनियन के क्या हो मैं वो पोस्ट ऑर्डर अध्यक्ष हूं, उन्होंने लिखा है हाँ ठीक है अगर होगा और उन्होंने कहा है you are not availed the वो and what is the statutory force of that policy विदाउट it is not binding on it is not If- having any legal force मिलॉट इफ इट नॉट अगर ऐसा पॉलिसी होगा तो जितने भी पद लिए हुए हैं वो कहीं इनको ट्रांसफर नहीं कर सकते नहीं सर. सालों साल चाहे कितनी भी है नहीं सर वो उसमें इसीलिए बैरियर लगाया नहीं, है उसमें ऐसा इसीलिए बैरियर लगाया कि 4 ईयर नहीं, मैक्सिमम 4 ईयर. 4 years and your conduct should also be noted माय कंडक्ट इज वेरी क्लियर मिलॉट ये तो आप बोल रहे हो तो हर आदमी बोलता है, कोई अपना Sir, लक्ष्य भाषा बोलता they है even not single word says in It's the not com- consider my You have representation the Lord. authority to dwell upon policy para 33 and consider your case and if you are found fit in उनकी जो यार्डस्टिक है कंटिन्यू कराने की दे विल कंटिन्यू इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू चैलेंज दैट अगेन ठीक है इसमें कर देना This is Dispose the. Huh? I am really sorry, sir. Yes. This is okay, my lordship. My representation has not been pending, my lordship. अभी मैं फिर से लिखता हूँ ना रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसा आप वो कैश कर देता हूँ and जो then, my lord, उनको ये कहे कलेक्टर को ये ऑर्डर हो कि सर कम से कम उसको lenient व्यू से कंसीडर करें. अरे आप अब इतना थोड़ी बोलेंगे कि दुलार करते हुए Policy आप के जो 33 पॉलिसी में है वैसा करेंगे ऐसा थोड़ी होता है कि Sir, they are not considered, my lord. They are not considered at all, my lord. व्हाट इज लीनियंट व्यू The lenient view, what के लिए the policy, what the policy said, my lord. भाई उनको देखना है पॉलिसी वेदर द पॉलिसी इज एप्लीकेबल It is ऑल ऑफ applicable. देम और वेदर देयर आर राइडर्स टू दैट पॉलिसी कि आपका कंटेंट ऐसा नहीं है कि आप कोई पोस्ट होल्डर हो एंड यू आर कमिटिंग इरेगुलरिटीज टू इरेगुलरिटीज एंड यू विल बी कंटिन्यू And बिकॉज़ ऑफ there is till now they will also have to see what is the legal force of that policy it is merely a guideline it is not binding it has no till statutory date force. there is no department inquiry against me. There is no complaint against me. तो ऐसा दिया है क्या पॉलिसी में कि जो पोस्ट नहीं सर what my lord has said कि conduct and what the collector said, my lord. ठीक है I'll pass a order speaking order कर देता हूँ passing the rejection of the representation to consider afresh considering this policy 33 within a period of 30 days Well. तब तक you will continue in the place which where they are staying Well. और कुछ लेना तो नहीं है ना सर केवल इतना कि if they rejected my representation then the 15 days will be breeding time. काय के लिए सर यहाँ तक आने के लिए सर वापस नहीं तो ये तो रिजेक्ट कर देंगे फिर 15 दिन तो रिजेक्ट कर देंगे टर्मिनेट थोड़ी कर देंगे सर मेरे को रिलीव कर देंगे आजकल पटवारियों की कलेक्टर के ईगो के आगे पटवारियों की क्या सर you know how well to deal with all those सर 15 डेज का तो कम से presence कम of the collector we dispense